question that everybody is asking is, it's a critically acclaimed budget that you have presented to the parliament. Critically acclaimed because it ticks all the right boxes in terms of capital expenditure, long-term investment, opportunities of employment. लेकिन अगर आप बॉक्स ऑफिस हिट देखना चाहें जिस तरह बॉलीवुड को देखा जाता है, तो बॉक्स ऑफिस हिट पर इस बजट में शायद कुछ कमी रह गई है, क्योंकि मैं अभी अंदर आ रही थी नॉर्थ ब्लॉक और जितने लोग चल रहे थे रायसीना हिल पे, कुछ टूरिस्ट थे जो राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक देख रहे थे, या कुछ सिक्योरिटी के लोग खड़े थे, पियोन्स वगैरह थे, इन सब से मैंने पूछा बजट कैसा लगा, तो उन्होंने कहा हमें कुछ मिला नहीं. Do you think your budget will be rated on the fact that it is the dream for economists, but as far as the Aam Aadmi is concerned, laddu nahi diya aapne haath mein? Well, you have a way of putting things, so it might be difficult for me to answer it in that way. But I think we have kept every section of the society, particularly in a pandemic-affected time when we are coming out of it, and looked at what can be a sustained way, sustainable growth can be achieved. And for growth, what is growth actually? If there is activity, if there is economy in its right track, jobs being given, and investments happening so that more production or more service can happen, that will in turn also need more people to come and work, and as a result the economy will benefit in every segment. Now investments are certainly coming not just from outside, but also Indian businesses, having gained from a reduction in the corporate tax 2 years ago before the pandemic, are also coming on board to expand capacities, or to expand capacities through mergers and acquisitions and so on. So that is the macro picture. At an individual level, we are making sure people can have their houses, people will get water in their houses, people will have gas cylinders given to them, people will be ensured that their village and the roads will reach them, and the village will have all kinds of facilities so that they can commute, so that they can take their goods and whatever the wares that they produce to the urban market. We are trying to give them the benefit of internet connection, because today digital payments are all active. So I think these are things which are being done keeping individuals in mind. Now, I don't know how many of them, the moment they saw Navika, they thought they should say, no, mujhe kya mila? I also pass by this road every day. Probably I don't look so accessible like you do, but I understand if people do say that to you, saying, I haven't got anything in particular. But I like to remind, they probably come from certain places where they didn't have water connection till now. They didn't have road connection till now. They didn't have electricity till now. And I'll straight away say, if this is the kind of thing even the opposition is playing up by saying one India, two India, it is the two India that they have created that we are trying to bring together as one India. Make all Indians feel that they are part of this developmental, raftar, as they say. So the two India can be a good thing for the opposition to speak about, but they left the two India, which we are now trying to bring all together by giving every kind of facility, bank accounts, DBT, payment to the farmers, even the house which is getting constructed, money for building your own houses, houses without toilets. Which Prime Minister will ever speak about it in the Independence Day Red Fort Bhashan? Prime Minister Modi did it. It's all right for somebody to stand today and say, two Indias you created. You created an India where poor people couldn't even have a toilet. So, Navika, we are working for everybody. राहुल गांधी की बातों को आपने शायद दिल पे ले लिया है. राहुल गांधी ने कहा कि आप दो भारत बना रहे हैं, और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए. आंकड़े दिए कि आपने शायद 27
23 करोड़ भारतीय लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे कर दिया, गरीबी रेखा से नीचे कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 सालों में उनको कम से कम 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर किया था। राहुल गांधी के ये आंकड़े, इन पर आप क्या कहेंगे? पहला मैं आपके प्रश्न के शुरुआत में आपने ये बोला कि आपने दिल पे ले लिया। पार्लियामेंट में एक वरिष्ठ पार्टी के लीडर, उनके अपने अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे मालूम नहीं है, आकर वो एक बात बोल रहा है तो उसका तो मैं सीरियसली लेकर जवाब देना मेरा दायित्व है, मैं उसको सीरियसली लूंगी। मगर ये भी नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में आप जो भी मन में आता है बोल दो और चले जाओ, और जब बारी आती है जवाब सुनने के लिए तब बैठकर क्षमता के साथ सुनना चाहिए। मगर कांग्रेस के आजकल की आदत ये हो गया है कि जब हम पेशेंस के साथ सुनते हैं उनके बातों को और पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, वो बैठते नहीं, चले जाते हैं, शायद विदेश भी चले जाते हैं। इसीलिए मैं इस मौका छोड़ने वाले नहीं हूं। जब आप प्रश्न पूछते हैं उसको सीरियसली लेकर के जवाब दूंगी। तो राहुल गांधी की गरीबी वाले नंबर पर आप क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगी राहुल गांधी को जब वो कहते हैं कि आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया, जबकि उन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया था? मैं पहला राहुल गांधी से ये पूछना चाहती हूँ कि गरीबी के डेफिनेशन इनका पता नहीं क्या है। जो गरीब, उनके घर में बिजली तक नहीं था, जो घर उनको मिलना था वो नहीं मिला, और जो घर उनका गांव में सड़क का सुविधा तक नहीं था, और जो घर जिसमें आप जैसे मेरे जैसे महिला बैठे हैं और उनको कम से कम कुकिंग गैस नहीं मिलता, रसोई गैस नहीं तक मिलता, और इन सब को बिना भेदभाव सबको पहुंचाया पिछले 4-7 साल में, और अभी भी उसका नंबर बढ़ा रहे हैं, जो कि अगर कोई छूट गए तो उनको भी वो पहुंचाएंगे। ये सब गरीब को पहुंच रहे हैं कि अमीर को पहुंच रहे हैं? इसीलिए जब राहुल गांधी जी बात करते हैं ये भी जवाब दें, क्यों जब 2014 में नया हमारी सरकार आया इतनी सारे लोग के घर कम से कम पेशाब करने के लिए या महिला को शौचालय तक नहीं था? ये गरीबी या अमीर का लक्षण है? राहुल गांधी का गरीब मतलब कौन? जिनके हाथ में ये बोलते हैं कि मनरेगा के द्वारा, महात्मा गांधी ग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा पैसा मिलता था, वो गरीब है। मगर उन तक भी पैसा नहीं मिला। उस समय के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट में कितनी फ्रॉड अकाउंट्स थे, गोस्ट अकाउंट जिसका बोलते हैं, जो आदमी जिंदा नहीं है मगर उनके नाम पर अकाउंट है, उनके पैसा पहुंच रही है मनरेगा के नाम पर। ये सब निकल कर आया। इसीलिए गरीब इनके रिश्तेदार के नाम पर, गरीब के नाम पर इनके रिश्तेदार के पास पैसा जाता था। ये गरीबी इनके लिए चाहिए क्योंकि उनके नाम पर डाइवर्ट होता था पैसा। इसीलिए गरीब के ऊपर जब ये रोते हैं, व्हाट यू से, क्रोकोडाइल टीयर्स को, मगरमच्छ के आंसू, राहुल गांधी हर बार खड़े होकर के गरीब 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 बोलता। हरियाणा में, राजस्थान में किसानों के जमीन को कब्जा करने वाले जीजाजी के बारे में कुछ नहीं बोलते। और जब कांग्रेस के सरकार पंजाब में था, किसान को प्राइवेट के हाथ में कुछ सेल करने का एग्रीमेंट अगर होता उनके कानून के मुताबिक, अगर किसान उसमें लास्ट उनकी फसल जब आने को तैयार के परिस्थिति में है, उस समय अगर वो प्राइवेट पार्टी को बिकना नहीं चाहता, वापस हटना चाहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ऑफेंस में किसान जेल तक पहुंचना था उनके कानून के मुताबिक। ये किसान फ्रेंडली है राहुल गांधी? वो कांग्रेस के सरकार पंजाब में क्यों नहीं जाकर के किसान के विषय में वो टिक करवाया? मगर आंसू, मगरमच्छ का आंसू कभी भी
और राजस्थान में क्या हो रही है, आज तक क्या हो रही है? दलितों की, गरीब महिला की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। हर दिन एक ना एक रेप का कांड हर दिन आती है। महिला हूं, लड़ सकती हूं क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जाओ उधर लड़ो, महिला के हक के लिए उधर लड़ो, गरीब के हक के लिए उधर लड़ो। नहीं, हमारे आंख तो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, जहां महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए इनके मैं उदाहरण लेके हर कांग्रेस राज्य से उदाहरण लेकर बोल सकती हूं कि उधर के व्यवस्था अलग है, पार्लियामेंट में उनकी व्यवस्था अलग है बात करने का। हिपोक्रेटिकल है। जहां इनके सरकार है उधर जाके रोना चाहिए, उधर जाके सही करना चाहिए। महाराष्ट्र में इनका अलायंस की सरकार है, उधर आज भी किसान के ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस है। आज भी किसान उधर कुछ ना कुछ एक एक दिन आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के बारे में इधर रोना क्या है, उधर जाके सही करो। टोटल हिपोक्रेटिकल भाषण है जी। You spoke very well in Hindi, and I must compliment you on that. Rahul Gandhi also asked a question, and he said, apart from the Omicron virus, there is an AA virus that is circulating in this country. And he once again attacked industrialists of this country. He said there is the Adani-Ambani virus. He also said that the disparity in incomes is increasing. He spoke about 146 rich people in this country that own most of the wealth of this country. Do you think income inequalities have increased over the last 7 years? There's one thing which we'll have to recognize, Navika. Pandemic had its own impact on people. And the government came up with not one, but 5, 6 within that year, 2020, 2021, with several steps in response to the various stress that was being voiced, which we could feel, which we had to react to, and we responded. So whoever in their right mind can say there has been no suffering. There has been immense suffering. People from various sections have suffered. And at that time, our response was first reach some relief so that people have something in their hand, they can do something, give them food, they don't need to be in a situation of hunger and so on. Then, of course, you had the issue of hospitals getting oxygen, getting medicines. Till such a time, we had the slight relief offered by the vaccines. Once the vaccines came, we also took it up in such full earnestness that vaccines reached people and we were. In the meanwhile, you also saw that small businesses, we gave them some kind of a sovereign guaranteed assistance through banks. And not me, not Government of India, there's several private researchers, reputed, are all coming out with figures to say that that has been some lifeline for MSMEs. So it's not as if we are saying that we are indifferent to the problem. Not at all. We are responding to the problem. So, yeah, and it is the right of the opposition to stand up and say there is suffering, you please attend to it. Absolutely, well taken. But to speak as though nothing at all is happening, let me remind, he belongs to the party which sold and made profit out of vaccines given by the central government to the states. Please, have you all forgotten it? Would we please remind Rahul Gandhi, if you're so concerned about human suffering, would you make money? Would you profit here with vaccines which were given to you by the central government? And unashamedly, today you're talking about, what has the central government given? You've been given vaccines to reach out to the poor people, to people who desperately need that little protection. You made money out of it. But the man under whom that money was made is now your alliance partner and no longer with the Congress party. Captain Amrinder Singh was the chief minister there. Very well reminded. Very well reminded. What I expect of a party leadership to do is to tell its government. Why? For that matter, if he's so earnest, he should have removed Captain Amrinder Singh there and then. Did he? No, he wanted him there. Now when Amrinder Singh has left, you badmouth him.
But who was behind the profiteering on the vaccine? You're saying Rahul Gandhi was? No, let him at least point out who the responsibility was on. He didn't take action on anybody at that time. Now it's very good to make a virtue out of somebody who's gone out and badmouth him. Okay, if this is the case, what about Rajasthan? Vaccines were found in dustbins. The same CM continues, the same government continues. Even today you don't have an action, just as you don't have an action about the rapes which are happening there. So Rahul Gandhi, please, all the drama is only in the Lok Sabha. Your own party will not entertain you if you go and tell them anything there. Your own party will not listen to you. For that matter, the 2A virus that he's talking about. I've said this in the parliament itself, before the Congress members, and people stood up to correct me, and I said, I challenged them. I'm saying it now again. A virus for you. You invited one of the virus on a platter to build one of your ports in Kerala, Virinjam. That port is now being built by one of the A, which is a virus. You invited them. Congress government invited them. If I remember the name of the CM correct and subject to correction, Woman Chandi. Congress. You invited a virus. So Rahul Gandhi, total hollow claims. And because he's got a, what you call captive audience, sitting behind him for everything boss says. I'm astonished at the brazen arrogance to throw allegations, many of which are at his doorstep. He should correct it. And I repeatedly say, people will not take him seriously, and I think people are now having entertainment when he stands up to speak. Good enough? Former Finance Minister Mr. P. Chidambaram held a press conference right after the budget presentation. And he said that of course, repeating some of the facts that were stated by Mr. Rahul Gandhi. He said, you've also commented on his statement saying, for a party that claimed 1991 opened the world to say this was a capitalist speech is a certificate. What do you mean by that statement? Because, yes, budget for capitalists, budget for corporate India or India Inc. is how the Congress has called your budget. That's why I'm saying it's a certificate. But if he intended to say capitalist budget as though it's a terrorist budget, I'm sorry. You were the one who opened the door then. You were the one who brought so-called transition between that socialist India to capitalist India. We've anyway, from Jan Sangh time, said and repeat and reiterate that we believe in individual enterprise. We believe in the capacity of individuals to create business, give employment, also create wealth in the country. We look at them as wealth creators, job providers, and therefore Prime Minister Modi has never hesitated. He said, I'll put red carpet, I'll remove the red tapeism. We are doing it. We've professed to do it. Our manifestos have said it. Our earlier version, Jan Sangh, has said it. Nothing hypocritical about it. Whereas if you're trying to mock at me by saying, oh, this is capitalist budget, 97 budget and 91 budget don't take claim for it anymore, saying we've done a great job. You opened up India. And all of us have said, oh, great, good. And after that, you stopped. We have taken it up. Vajpayee took it up. We have taken it up. We are forwarding and moving forward on that agenda. So what is this? Is it a comment to say capitalists are wrong? At least I'm not a crony capitalist. I don't have a son. I don't have a daughter. Mr. Chidambaram also... Who I promote. I have a daughter. I'm not denying I have a daughter. But I'm not promoting. I don't crony. Well, I hope they're watching this interview to get the message that you're sending them. Mr. P. Chidambaram also points out two important figures. One is the decline in per capita income from the period of 1920 to 21-22. And then he talks about the decline in the capita. From 1920? From 2019-20 to 2021-22, okay. From 1,08,645 crore to about 1,07,000. That's the per capita income decline. And
The bigger problem is the decline in per capita expenditure. And this is where the issue of the middle classes, the salaried classes comes in. Expenditure is declining per person only because people don't have money to spend. People have lost jobs, people have got salary cuts during COVID, and there is a rising unemployment. In the middle of this, निर्मला सीतारमन, बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आए जब बजट प्रेजेंटेशन चल रहा था, हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आए और कहा कि मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को कुछ नहीं मिला। 3.5 करोड़ जो टैक्स पेयर्स हैं उनको हम दबाए चले जा रहे हैं। जीएसटी की इनकम बढ़ रही है, वेरी गुड, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली सैलरीड क्लासेस को। ये बहुत बड़ा चार्ज है आपके ऊपर। Well, these are very sensitive times when people are in a pandemic-affected time. We are making sure that the economy will revive. So any comment that I give at this time will lead to, or any comment can be, misconstrued. So I fully understand that. But have I increased anybody's rates? इसके लिए थैंक यू बोले? No, I didn't say that. That is why. People like you are the first one who jumped to a conclusion much before I finish a sentence. And that is why I started with anything that I say will be misconstrued. You put in the word misconstrued, and you are misconstruing already. Please, hold on. I'm not asking you to thank me for not raising the tax. I wanted to give tax stability. I didn't want to bring in any upsets so that, individuals would have planned their own businesses. By reducing, it could give a relief, but it could also have an implication in very many different ways. And if I say an explanation or if I expand on it, even that, I'm sure you'll jump to give me, oh no, but that's, but if, but this. But therefore, one, tax stability, continuity in policy. And third, again, you brought in the picture of GST. Even there, I must thank the GST Council, the entire Council. Even 2 years ago, early 20, when the Council met and when there were proposals for rationalizing the rate on certain items, the Council, in its collective wisdom, said no, time is not appropriate, we shouldn't rationalize now. When you take up an exercise of rationalization, it means in some items it might go up, in some other items it might come down, but it will certainly mean that there will be ups and downs, which the Council didn't want. And I'm very grateful they took that call. And since after that, till today, GST Council has held back anything on rationalization, saying we shouldn't increase the burden. All right? That's very good. And similarly here, for a government which had to stand by the people and give as much as we can, help people, increase the budget on Manrega, which is absolutely justified, I'm not grudging it. Look at rural, economy. Look at wanting to support the farmers, making sure that rural incomes are kept up. I would have had all the temptations to say some kind of a, media was speculating, COVID tax. The Prime Minister was very clear from day one of the last budget preparation and this budget preparation. Said, no, we shall not increase 1 paisa as revenue for meeting our commitments in these days for COVID. We didn't raise any tax last year, nor did we raise any tax this year. I want to underline the fact these are difficult times for everybody. I have to be conscious, and I am conscious. But if I'm made to answer, and if I'm being frank enough, I run the risk of being misconstrued. And people would then say, oh, you want us to be grateful because you've not increased the tax. No, I don't want you to be grateful at all. But I just want to remind you that I had grave temptations, but I didn't yield to it. Would it be an answer at all that you want to hear? अगर समझा जाए
तो समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं अर्थशास्त्री समझ सकते हैं, अप्रिशिएट। अर्थशास्त्री नहीं है, मैं सीधा आम जनता का भी जवाब दे रही हूं। भैया मैं सचमुच हर वर्ग के लिए कुछ पहुंचाने के लिए हर कदम कोशिश कर रही हूं। लॉकडाउन के समय, उसके बाद भी हर सेक्टर, छोटे मोटे बिजनेस चलाने वाले के लिए 5 लाख तक इस बजट के द्वारा 50,000 और ऐड करके 5 लाख तक सॉवरेन गारंटी के साथ आपको एक्स्ट्रा पैसा लो, आपके बिजनेस चालू रखो, उसके लिए अलग सिक्योरिटी देने का आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी स्टैंड कर रही हूं, मतलब सरकार गारंटी स्टैंड कर रही है। ये सब भी आम जनता के लिए ही हम कर रहे हैं। आप किचन चलाती हैं, आप भी गृहिणी हैं, मैं भी गृहिणी हूं, और आपको एक्सपीरियंस होगा कि महंगाई बढ़ गई है और किचन का जो खर्चा है जितने पैसे में पहले चलता था अब नहीं चलता है। पेट्रोल के दाम 110, 109 इस रेंज में चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप 2 साल से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, टैबलेट भी चाहिए, और इन पे खर्चे होते हैं। और उस समय में नौकरियां भी गई हैं, सैलरी भी कट हुई है। तो एक घर का, मानती हूं कि सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन आम आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आम आदमी के पास कोई और चारा नहीं है। आपने जरूर गरीब कल्याण योजना दी है, वो एक वर्ग को पहुंचाता है राशन। आपने आयुष्मान भारत दिया है, वो एक वर्ग को पहुंचाता है इंश्योरेंस। अच्छी बात है, लेकिन मध्यम वर्ग का कहना यह है, मिडिल क्लासेस का कहना यह है कि हमारे भी खर्चे बड़े हैं, हम भी कोविड से लाचार हैं और हमारे भी हेल्थ एक्सपेंसेस गए हैं। कहीं होम लोन में, कहीं मेडिकल एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा टैक्स की रियायत मिल जाती तो कुछ बोझ कम होता। क्या ये सोच आपके दिमाग में थी? और अगर आप उन्हें पूरा नहीं कर पाई तो मजबूरी क्या थी? नहीं, बिल्कुल थी। और मैं ये बात भी याद दिलाना चाह रही हूँ नाविका, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जब चर्चा आई, दीपावली के एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उसको कट करवाए, और मुझे मालूम है हर राज्य तुरंत उसको उसी हद में, उसी एक्सटेंट तक उनके स्टेट के तरफ से भी वो बहुत सारे सरकार कम करवाए। इसीलिए तो क्योंकि इतने विदेश में हम सब जानते हैं इस देश में क्रूड ऑयल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, हर बूंद पेट्रोल इंपोर्टेड है। ओके, 2% ऑफ द टोटल कंजम्पशन भारत में ही कहीं ना कहीं ऑफशोर से, ऑनशोर से मिलता है, बट मोर देन 90% कम्स इंपोर्टेड। उसका बिल हम ही पे कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे करते हैं। सो उसमें प्राइस कटवाने के काम प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसके बाद बहुत सारे राज्य, दोबारा वो बात में जा रही हूं, कांग्रेस की सरकार कम करना मुश्किल समझा और ऊपर से लेक्चर भी दिया, नहीं हम कम नहीं करेंगे। ये भी है, वो आंसुओं के पीछे ये भी है, दैट क्रोकोडाइल टीयर्स के पीछे ये भी है, हम कर नहीं पाए, अरे मोदी जी करवा दिया, हमने किया। फिर बात बोल रही हूं छोटे बिजनेसेस के लिए मदद करना किए, और हाउसेस के लिए मैं ये बात याद दिलाना चाह रही हूं नाविका, 2019 में जब इस सरकार दोबारा बनी, चर्चा में क्या था, मिडिल क्लास के हाउसेस फंस गए हैं, अटक गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो नहीं पा रहे, लोग छोड़कर भाग गए। उन सबको एक सॉल्यूशन हमने निकाल करके दिया, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट हो करके मिडिल क्लास के हाथ में चाबी मिल रही है, जो 8 साल से लटक रहा था। ऑल ओवर द कंट्री मिडिल क्लास के हाउसेस जो रेंट भी पे कर रहे थे, बैंक से जो लोन लिया EMI भी पे कर रहे थे, उसको राहत किसने दिलवाई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाई। वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है क्या? और मैं दूसरे तरफा से आंसर दे रही, फार्मर्स के आपस में मिडिल क्लास नहीं है,
आपके अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, आप LRS में पैसा देने के लिए उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट करने वाले कौन है? आप पैसा विदेश में भेज रही हो, उसके लिए हमने रिलीफ नहीं दिया, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। स्टार्टअप के बच्चे, लड़की और लड़के इतने शानदार काम कर रहे हैं स्टार्टअप, वो मिडिल क्लास बच्चे नहीं हैं। उनके लिए कितने फिस्कल इंसेंटिव दिया गया है, वो उसके लिए मार्केट में सुविधा करने के लिए कानूनन कितने प्रावधान को रिलैक्स किया गया। वो बच्चे वो नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है। नीट के द्वारा सीट्स बढ़ा गया है, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इतने सारे एम्स ओपन हो रही है, जिसमें काम करने के लिए डॉक्टर्स नर्सेस का आवश्यकता है, उनके लिए काम उधर मिल रही है। वो मिडिल क्लास नहीं है। हर तर्क का जवाब है आपके पास, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि पोल बाउंड स्टेट्स ही अगर देख लें तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 लाख घर बने हैं जो 55% ऑफ सैंक्शनड अमाउंट है। उत्तराखंड में 36% ऑफ सैंक्शनड अमाउंट है। पंजाब में 43% ऑफ सैंक्शनड अमाउंट बने हैं। इसके अलावा जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, 35.4% का आपने कहा है इंक्रीज करेंगे। पिछले साल द एलोकेशंस दैट हैव बीन मेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव नॉट बीन यूज्ड। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू make is that yes, this did get the headlines. 35.4% increase in capital investments, capital expenditure did get the headlines. The fact is, if you look at last year's performance, it wasn't fully utilized, and therefore the kind of jobs, the kind of investments that were expected did not happen. And it's always stated that there is a lag in all of this. The biggest problem in the economy today is unemployment. 8% in the formal sector, that's the CMIE number. I want to ask you, what in this budget is the solution for those jobs in case you don't meet the target of capital expenditure this year? Now, 1 minute. Last year, when we increased the capital expenditure, for the first time to that extent, we took it up to 5.5 lakh crores. 1st February, the budget is announced. Sometime well before 31st March, the budget is passed. In fact, passed even a bit early because of the second wave. April, the second wave, and its impact was literally on the first quarter. April, May, June. So that quarter, the speed with which we wanted the capital expenditure to go to the ground was slowed down. As a result, what had to be achieved in the first quarter moved to the second, moved to the third, and so on. So whilst I have closely monitored it, at least as regards the central government, and I remember Honorable Prime Minister himself sometime during the late half of second quarter or early third quarter had mentioned it in the cabinet to all the departments, saying, please, this is not for anything else but for the revival of the economy. Please ensure that it is fully utilized. Ministers went back, did their very, very best. Now, till December, about 65 to 66% had been achieved, and hopefully till March, it will go till about 70, 80, whatever. I think about 80, 82. So that's the real picture. We have also last year made an announcement that we will give 10,000, at the BE stage, we had said 10,000 crore to the states so that they can do what they want rather than, be guided by the centers, one size fits for all. You do what you want, you take 10,000 and make sure projects are done. States did very well. Many states hesitated to join in initially, but afterwards they also came in. That was increased to 15,000 crores even within the 12 months in the RE itself. This year, I have given states 1 lakh crore. 50-year interest-free amount, purely for capital expenditure. Why is that? Because we want at the state level big ticket expenditure to happen for asset creation, which will mean immediately projects, immediately in situ jobs, and therefore the attention is given for job creation.
I also want to ask you the question on subsidies. Subsidies going down, again, economists would appreciate the fact, but many people say agriculture sector hasn't got as much as it needed. Manrega allocations are slightly down. Health allocations are slightly down, especially in the middle of COVID. Question most people are raising, if these expenditures go down, do you think it's going to augur well for these sectors? They've not gone down, Navika. Yes, if you were to compare RE with BE, you'll find it is lesser. But BE to BE, it's probably the same, or in most cases, it's more than what was given last BE. In some cases, it's exactly the same amount. That's because the way in which finance is managed, you give an amount in BE, and most of these programs are demand-driven. So when Manrega workers come to roll on, I mean, like they come and enlist themselves, obviously then it is catered to. When the demand goes up, we increase it. Like the way during COVID, what was originally given as just about 70,000 was increased to 1,11,000 that year, 2020. So this year too, like last year, we've given exactly the same amount to start BE to BE. And if there is more need, second supplementary demand, third supplementary, we can always add up. Health is not given less. If you look at various different heads under which health receives money, all of them have got increased allocation. But yes, vaccination now may not require that much, but we'll still fund it as long as, all eligible population get it. So that's the second. And third, farmers. I'll just say one thing, all programs stand. PM Kisan, Saman Nidhi, Nutrient. Last year, the global prices of fertilizers went up, skyrocketed. We, again like petrol, we import every grain of some of these urea material. We took the hit. We bought it at a higher price, very much higher, but we didn't shift the burden to the farmer. That is on us. These are contingencies which arise, and we keep a provision to make sure that the contingency is met when they arise. That doesn't mean that I upfront say there will be a contingency, so I'm keeping this. Not at all. The contingency may today be on fertilizers, tomorrow it can be on anything else. I have to keep prepared for that. I'm ready for that. You are ready for that. The cushion is available. Yes. So let me ask you, the one word that came very often in the budget, and that's caught the imagination of people, is the word digital. Digital currency, digital assets which are going to be taxed. You haven't used the word crypto. Why do you refrain from using the word cryptocurrency? Is there a problem with using the word cryptocurrency, or are we pretending it doesn't exist? But is it not digital? It is, but... So I use digital. But the fact that you're taxing it, some of the experts from the finance ministry have said doesn't automatically make it legitimate. So yes. Where are we? In no man's land? Because it's being taxed, but it's not legitimate, so we don't know what's going on. And on budget day itself, you saw the queuing up for cryptocurrency that was happening. I want to ask you, why doesn't the government take a position so that you don't have another situation where people get into chit funds and then there are lots of Aam Aadmis who've left stranded? Why don't you educate people? Why don't you take a position on whether it's legal or not? No, educating people is happening. PIB had issued sometime, I think 3 months ago, there was a statement given out by PIB as to what is the nature of things, and a number of advertisements which were coming full page in newspapers. So we did alert people about it. So that's one side. The other, extensive consultations are happening with all stakeholders. And we will take a position as to how we want to treat it. Now, I can see a lot of concern in your voice when you tell me, what is it? What are you doing? Why don't you tell clearly? What is happening till before we say anything? What was happening last year? Nothing stopped people from doing what they wanted to do. By my not saying people are confused now? Not at all.
But I've said clearly, you go ahead if you want to do something, but then if there is a transaction and if profit is made out of that transaction, for the profit made, I will definitely tax. And for transactions where probably no profit is made and transactions are happening, 1%. 1% TDS, and that's not an additional tax. It's a TDS, you go reconcile it with the rest of the other transactions. Is it retrospective? Parliament has to first of all approve, right? So let it get approved and then you will get to know. One. No, Second, but what have you said? I mean, in the sense that what do you plan to do? Is it going to be for the year ending March 31st or No. will it begin from April? as soon as from when the Parliament approves it, or whenever the finance bill comes for discussion, I would think. It's the next... I have not mentioned anything to do with retrospective in it. Then, about the digital currency. It's currency, I use it here. It is the prerogative of a sovereign authority. And in this case, the central bank, which is Reserve Bank of India. So currency will be issued by them? But the central bank was also of the view that crypto should be banned. The fact that you're taxing it, not banning it, at least makes us assume that you're not in a mood to ban it outright. Is that the right way of interpreting it? Well, the consultation will have to tell me as to what are the kind of... आप tax कर लोगे, फिर बाद में बोलोगे कि ban कर दिया. There is no way anything can stop a sovereign government, if it so desires, to tax an activity. Banning or not banning is subsequently when the consultations give me inputs in such a way that I can or I need not. That happens afterwards. But would you say till then I don't even tax when huge profits are being transacted? I will. Legitimate or not legitimate is a different question. Taxable is completely my prerogative. So the question people want to know and have answers to, when will RBI be out with its digital currency? Have there any conversations happened before the budget was presented? Because you came up with this idea. Obviously, so is there a time frame that we'll have to see? First of all, let this get passed. And many people are saying that there is no regulatory body for these digital currencies that exist. Has that stopped them from going into it? Well, it hasn't, but there might be some people who will burn their fingers, yes. and then the whole problem is going to land at your doorstep, no. Just like the PMC bank, let's say, or the chit fund scams that have happened. No. PMC Bank or any other bank are banks which went foul because some wrongdoings have happened. But here is an area where nobody has gone in yet. We are doing the consultation. But $6.6 billion worth. I don't know 50,000 crores is being traded, and the government can't be pretending to say that we don't know. No, we're taxing them. मतलब पैसा कहीं से भी मिले, वो कैसा भी हो. मैं सरकार चलाना जी, पैसा चाहिए. गरीब के लिए इलीगल जिसको आप बैन करने वाले हो, उससे भी पैसा जब तक मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आंखें इस तरफ रखूंगी. नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन मैं लोगों को एजुकेट नहीं करूंगी. नहीं, मैं निर्णय लेने से पहले सबसे बात करके निर्णय लूंगी. ये नहीं है कि मैं इधर दिल्ली में आपके साथ बैठ करके तय करूंगी कि बैन करूंगी, नहीं करूंगी. ऐसे ही थोड़ी ना चलती है. कब तक? कंसल्टेशन खत्म होने दीजिए, उसके बाद. टाइम फ्रेम 3 months, 6 months? देखते हैं. मीडिया के द्वारा टाइम फ्रेम निर्णय नहीं करते हम. मीडिया तो लोगों की तरफ से पूछ रहा है. हाँ, हम वी आर द कम्युनिकेशन चैनल. एब्सोल्युटली. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कंसल्टेशन चल रही है, उसमें जनता भी भागीदारी है, शायद आप भी भागीदारी है. खैर मुझे समझ में नहीं आता है क्रिप्टो करेंसी, और हमारे सैलरी क्लास के पास आपने ऐसी करेंसी छोड़ी नहीं कि कहीं भी हम डाल सकें, क्रिप्टो हो या बैंक में हो. नहीं, अगर आप आपके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, मगर इससे पहले बजट के शुरुआत से पहले, प्रिपरेशन की शुरुआत के पहले मैं 2-3 मीडिया के प्रोग्राम में गई और उधर मुझे पूछा गया कि हमारे ऑफिस के लोग क्रिप्टो में हैं. हर लोग बोल रहे हैं कि क्या सरकार क्या करने वाले हैं. ऑफिस वो भी मिडिल क्लास है भाई, ऐसे मैं मानती हूँ. सो इंटरेस्ट तो सबके हैं, उसमें गलती नहीं है.
निर्मला सीतारमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन द रन अप टू एवरी बजट आपकी और प्रधानमंत्री की मीटिंग्स होती हैं, एक ओवरऑल मैसेजिंग की भी बात होती है। कितनी मीटिंग्स हुई और क्या इन मीटिंग्स में कभी आप पे या प्रधानमंत्री जी पर ये प्रेशर था कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश हमेशा माना जाता है कि दिल्ली का जो सिंहासन है वो लखनऊ से होती हुई सड़क जाती है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तराखंड है, पंजाब है, 5 राज्यों में है। कभी भी आप पर प्रेशर था कि ये चुनाव है तो ये बजट वोट वाला बजट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी प्रेशर नहीं था। देश के लिए, आपकी क्या देश के लिए, देश का ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के द्वारा जो बढ़ोतरी होती है उसके लिए जो प्लान करना है उसके लिए ही बातचीत होती थी। एक बार भी चुनाव के राज्यों के बारे में स्पेसिफिकली कुछ रेफरेंस नहीं था। और कभी आपकी पार्टी ने भी नहीं कहा कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी से जो कंसल्टेशन हुआ वो तो ओपन था, सब लोग देख रहे थे हमें, कोई चुनावी रास्ता से कुछ बात नहीं बोले, मगर हाँ ये बात बोले कि गरीब के लिए कुछ करो, SC ST के लिए कुछ करो, ये सब आया, स्टार्टअप्स के लिए कुछ करो, बिल्कुल ओपनली। और प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा कि शायद चुनाव हैं तो हमें इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि बिल्कुल नहीं। वोटों के लिए ये तभी पॉसिबल है अगर या तो बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है उत्तर प्रदेश, और या जीतने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए बजट में कोशिश करने की जरूरत नहीं। नाविका जी, दोनों में से कौन सा चॉइस चुनेंगे? आपके लोग ग्राउंड में उत्तर प्रदेश में हैं, आपके लोग उत्तराखंड में हैं, मणिपुर में है, गोवा में है, क्या आपको ग्राउंड से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे नहीं पता चल रही कि हमारे पोजीशन एकदम मजबूत है? यूपी में, हर राज्य में, गोवा, मणिपुर, सभी जगह, उत्तराखंड, सभी जगह हम सरकार दोबारा बना रहे हैं। एंड करना चाहूंगी इंटरव्यू, लेकिन आने से पहले मैंने ट्वीट किया था कि मैं वित्त मंत्री से इंटरव्यू करने जा रही हूं, तो अगर दर्शकों के और सोशल मीडिया पे किसी के कोई सवाल हो तो जरूर भेजें। कुछ सवालों के अगर आप जवाब दे देंगे तो शायद आम आदमी को लगेगा वो आप उनकी बात भी सुन रही हैं। तो अंजनी कुमार राय ने पूछा है, वादे के अनुसार पिछले 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्या जवाब है इसके लिए? नहीं, कोशिश लगातार जॉब्स के लिए हो रही है, और जॉब्स भी पैंडेमिक के बावजूद हमने EPFO के द्वारा उनके वो जो 12% वो बरवानी है वो हम सरकार के द्वारा ही बरवा रहे हैं। और स्टडी निकल कर आया LGS के एक इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम के द्वारा जो हमने MSME के लिए पैसा दिया सॉवरेन गारंटी के साथ, उससे more than 1.5 crores of jobs have been saved। ये पब्लिक स्टडी है, सरकार की स्टडी नहीं है। सो वो भी सेव हुआ है। किसान के लिए हर साल उनके हाथ में पैसा, छोटे किसान के लिए पैसा उनके हाथ में जा रही है, वो भी उनके काम आ रही है। इसीलिए रोजगार सृजन में सरकार कुछ पीछे नहीं हटा, हेल्प कर रही है, मगर पैंडेमिक के अवस्था में जरूर दिक्कत हो रही है। सुमेर सिंह 007 जेम्स बॉन्ड लगते हैं, इनका भी यही सवाल है कि सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी को लेकर है। एक सवाल है सुखप्रीत भट्टी का, वो कह रहे हैं नो एलोकेशन फॉर कोविड इमरजेंसी फंड व्हाइल ओमिक्रॉन इज लूमिंग लार्ज। Do you think there is a requirement for a? No, I have said that in the sense vaccination के लिए जो बड़ा सा 35,000 crores पिछले साल हमने अनाउंस किया, उसको इस साल उतना हद तक देने का आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं ओपन रख रही हूँ, चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। एक और सवाल मनरेगा पे है, क्योंकि लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट से आपके एलोकेशंस को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन की जरूरत है इस पे, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि मनरेगा की प्रोविजन एलोकेशन फॉर मनरेगा हैज बीन रिड्यूस्ड। नॉट एट ऑल, इट इज अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। जब भी डिमांड अमाउंट जो हमने दिया उससे ज्यादा होता है, हम डेफिनेटली भरपाई करेंगे, इसमें कोई शक रहने का आवश्यकता नहीं है।
सौरभ राय का भी यही सवाल है मनरेगा को लेकर और कृषि बजट को लेकर, लेकिन सतेश कुमार राय पूछ रहे हैं वित्त मंत्री जी से एक सवाल है कि स्टूडेंट्स के लिए आपने बजट में क्या दिया ताकि हम अपने हायर एजुकेशन को जारी रखें। और यही एक सवाल एक और स्टूडेंट का है जटाशंकर का, वो कह रहे हैं कि मैं एक प्रतियोगी यानी कंपेटिटिव छात्र कैंडिडेट हूं और पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूं। पहले अर्थव्यवस्था डाउन थी, फिर कोरोना आया, हमें इस बजट में कई उम्मीदें थी, लेकिन बजट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप ऐसे निराशाजनक बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी युवा के लिए मन में कभी भी चिंता रखते हैं और बहुत सारे विषय हमारे बजट में एक एक करके स्पष्टीकरण देख करके बात करना या विस्तार से बात करने का वो समय नहीं होता। 90 मिनट्स में ही पार्लियामेंट में पिछले बार लोग कहने लगे लंबा भाषण ना दो बजट में। फिर भी युवा के लिए बहुत सारा है, स्किल ट्रेनिंग का है, रिक्रूटमेंट का है, बहुत सारे विषय है उसमें। मगर ये भी सच है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर और खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सभी के लिए बहुत सारे प्रावधान है। इसीलिए मैं जटाशंकर जी से मैं जरूर कहूंगी कि आप निराशा ना हो, सरकार ध्यान में रख रही है और बहुत सारे प्रावधान भी है। हेमंत सी इनका सवाल भी वही है सैलरीड मिडिल क्लासेस को लेकर। अतुल कुमार का भी यही सवाल है। नेहा सिंह का भी सवाल है कि मिडिल क्लासेस को कुछ नहीं दिया और एनसीएलटी में कुछ नहीं हो रहा, लगातार ईएमआई दे रही हूं, बैंक सिविल ना खराब कर दे इस डर से अब ना घर मिल रहा है, उल्टा रेंट अलग से देना पड़ रहा है कुछ लोगों की। मैं एक और बात आपको ध्यान दिलाना चाह रही हूँ, वो लॉकडाउन के समय इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का चर्चा आया, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और बैंक ने उसको फुल पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट करने में बैंक जरूर खड़े रहना सही है, क्योंकि उनके कानूनन वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दे नहीं डिमांड करने का उनका कानून है। मगर उसका भरपाई भी मोदी जी के सरकार ने किया। नियरली नाउ इट इज रीचिंग समथिंग लाइक शॉर्ट ऑफ 7,000 crores इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के लिए मिडिल क्लास को अपसेट ना हो। उस समय का बर्डन जहां जॉब्स छूट गए और यू डिडंट हैव मनी टू पे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हमने, और मैं क्लेम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मिडिल क्लास का दुख समझ करके दिया। स्कूटर लोन है, टू व्हीलर का लोन है, रेंट मतलब क्रेडिट कार्ड का लोन है, ये सब भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का बजट में मैंने प्रावधान दी। पहले अबाउट 6,000 crores का, अभी वो शायद इज रीचिंग अबाउट 7,000 crores, वो भी मिडिल क्लास का ही था। तो आम आदमी शायद our viewers, our people who are asking questions would be very happy. Just as I wrap up this interview, one question on you're being criticized for your comment that you said ये यूपी type का comment है. What did you mean by that? Won't they say in Hindi, डंके के चोट पर or something like that? What is that? मुंह तोड़ जवाब. That's UP style जवाब. Smart answer, firm answer, right answer. UP style जवाब. गलत है क्या? पंजाबी भी बोलते हैं डंके की चोट पर, बस तो वही है यूपी स्टाइल। तो अच्छा, तो लोग समझ रहे हैं कि आपने यूपी को नीचा दिखाया। लोग को पता नहीं क्या चल रही है, हर विषय में दूसरे का गलती। नहीं, नो गलती यार, आई एडमायर, आई कैन स्पीक लाइक दैट, सॉलिड, मगर स्वीटली, शार्प, सटीक जवाब, ये यूपी स्टाइल का जवाब है जी, समझना चाहिए। मैं यूपी समझती हूँ। आप यूपी समझने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक ट्वीट एक राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था, बाद में डिलीट भी कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने, मैंने उस पर ट्वीट किया था तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री ने इसलिए वित्त मंत्री बनाया है क्योंकि आप सेल करती हैं, और उन्होंने हवाला दिया और आपकी एक फोटो भी छापी है पुराने समय में जब आप लंदन में। वो मेरा कॉलेज का फोटो है, स्कूल कॉलेज डेज, फर्स्ट ईयर प्रॉब्ली इन डिग्री।
Okay. That is a very old photo of mine. So they've tweeted that photo and they've said that आप sales के department में थी, इसलिए आप देश के assets बेच रही हैं. What do you make of that comment? I don't want to comment on it. These are things which you face, I face, many of the women ministers, Smriti faces, other women ministers face, women in politics in general face. This is just this attitude that I can do anything, say anything and get away. Misogyny? That plus the essential thing of, oh, somebody is doing a job. I'm not making any quick buck out of it. I'm purely here to serve my parties, to serve my government, to serve the Prime Minister, and serve the people of India because it's an opportunity given to me. If that's hitting somebody, well, it's their problem. Do you think people always question, because you're the first finance minister who's now presented the fourth budget, do you think people question women and their capability to be able to deliver? But one thing is sure, Navika, and I'm sure you will agree with me, for everything that a man does, women will have to do twice more harder, twice more apparently, and twice more with greater involvement to achieve the same level of appreciation or recognition or even a mere, yes, I can see this happening. Leave praise. I think most of us face this, and I think we've subsumed it as a part of our system. So it's all right. Does that make the going tougher for you? Well, I've got used to it now. Within the party, what's the support like? Well, I've had brilliant support. I have nothing against my party. Nothing at all to complain. But that mindset doesn't exist? Or are you forced to say this because it's the only thing to say? No, I've never had difficulties with my party, and the party, I think, is one of the best places for women to be in. Nirmala Sitharaman, thank you so very much for speaking frankly, as always. We wish we could speak more often, but thank you very much for joining me on Frankly Speaking. And kudos to you, for speaking such great Hindi. Thank you very much. Even UP-ish style, even if the budget did not have too much on UP, except Ganga Kinare, some farming. No, that is what, Ganga flows only in UP or what? It goes even to Bengal, doesn't it? So all through the Ganga's course, it goes into Bihar. There's no election there. So come on, Ganga is large for India. We need to. Ganga tera pani amrit and amrit kal ka budget. Absolutely. Well, thank you so much, Nirmala Sitharaman. You're welcome. Thank you. Thank you. Namaste.